हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर द 19th of April 2023। सेम सेक्स यूनियन SC2C स्पेशल मैरिज एक्ट कैन बी डीम्ड जेंडर न्यूट्रल। तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं, LGBTQIA+ कम्युनिटी में जो मैरिजेस हैं उनको लीगलाइज कर दिया जाए। तो इसको लेकर सेंटर ने बोला है कि ये अर्बन और एलिटिस्ट व्यू है। मतलब एक तो सिर्फ सिटी पीपल एंड सिटी पीपल में भी बहुत ही एलीट और अ वेरी स्मॉल एंड स्लिम सेक्शन ऑफ पीपल वांट दैट। सो सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि उसका क्या तरीका हो सकता है कि जो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्या उसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिससे मैरिजेस को जेंडर न्यूट्रल कर दे कि कोई भी जेंडर के लोग किसी शादी कर ले। तो नो अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर दैट। इट्स बिल्किस टुडे, इट कैन बी एनीबडी टुमारो। तो जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने आपको पता होगा बिल्किस बानो एक लेडी थी जिसका रेप कर दिया गया था, लेकिन उसके जितने भी कन्विक्ट्स थे उनको गुजरात हाई कोर्ट ने उनको फ्री छोड़ दिया था। और इसी को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ऐसा क्या रीजंस थे, क्या था जो आपने जितने भी कन्विक्ट्स थे उनको ओपन छोड़ दिया था, और उसकी फाइल्स सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाए। तो इसके जवाब में गुजरात हाई कोर्ट ने सेंटर ने जवाब दिया कि वो फाइल्स जो है वो थोड़ी सी सीरियस मैटर की है और उनको ऐसे हम दिखा नहीं सकते हैं। मतलब वो थोड़ी सी कंसर्न, नेशनल कंसर्न टाइप की है, ऐसे सेंटर कह रहा है। तो जस्टिस KM जोसेफ का कहना है कि इससे भी ग्रेव मैटर्स में हमें फाइल्स दिखाई गई है। सो आई थिंक इतना हम देख सकते हैं। सो इट इज अबाउट द बिल्किस बानो केस ओनली, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट जो है वो डिनाई करी कि क्यों उन्होंने बिल्किस बानो के जितने भी कन्विक्ट्स थे, जो 11 रेपिस्ट, जो कन्विक्ट रेपिस्ट थे, उनको छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को क्वेश्चन कर रही है। शाहरुख सूफी जैसे कोझीकोडे ट्रेन आर्सन केस। नाउ व्हाट इज दिस कोझीकोडे ट्रेन आर्सन केस? आपको पता ही है कि हम पिछले कुछ दिनों से इसको डिस्कस कर ही रहे हैं कि केरला में कोझीकोडे ट्रेन में आग लगा दी गई थी एंड उसके प्राइम सस्पेक्ट शाहरुख सैफी को दिया था UAPA। ओके, दैट इज UAPA, दैट इज I'm sorry, I'm just forgetting the full form, but it is for the मतलब ये टेररिज्म की तरफ से वो है। I'll check and let you know the full form. तो UAPA एक्ट को उन्होंने इन्वोक करा है ना। UAPA एक्ट का मतलब एज अ टेररिस्ट डीम करा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सो शाहरुख सैफी हैज बीन अरेस्टेड फॉर दैट, द प्राइम सस्पेक्ट। दिल्ली जैसे कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने बताया कि बहुत जल्दी दिल्ली में बहुत नए से रिफॉर्म्स और चेंजेस आएंगे जिससे बिजनेस और स्टार्टअप्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो गेट रेडी ऑल द बिजनेसमैन एंड विमेन आउट देयर। दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज रिगार्डिंग द BBC फिल्म वॉचिंग। सेंटर ने BBC फिल्म को इंडिया में देखना बैन कर दिया था। दैट BBC फिल्म वॉज इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसमें गुजरात 2002 में गोधरा राइट्स के बारे में भी बात करी गई है और उसमें द गवर्नमेंट वॉज ब्लेम्ड फॉर द गोधरा राइट्स। सो द सेंटर हैज बैंड कि आप वो BBC फिल्म नहीं देख सकते इंडिया में, बट स्टूडेंट्स स्टिल हैव वॉच्ड इट ऑन देयर पर्सनल डिवाइसेस, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी जैसे JNU यूनिवर्सिटी ने उन्होंने अपना सब लाइट्स एंड वाईफाई एंड इंटरनेट कनेक्शन सब बंद कर दिया. द स्टूडेंट्स स्टिल वॉच्ड ऑन देयर लैपटॉप्स एंड फोन्स एंड विद देयर मोबाइल डेटा एंड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन. So it's regarding that matter.
Okay. Delay in Bill's Pinarelli's talent to fight together. आपको पता है, मैं तो रोज आपको बोल रही हूँ that for a very long time now there is a tussle going on between the governors and the state governments. एंड ऐसा हमें टसल जो है वो ज्यादा उन स्टेट्स में देखने को मिल रहा है जहाँ पे बीजेपी, दैट इज जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, वो नहीं है. जैसे कि डीएमके पार्टी हो गई एमके स्टालिन की इन तमिलनाडु, या पिनरई विजयन की हो गई. सो यू नो ये उन्हीं स्टेट्स में ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है. तो गवर्नर्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस टफसल एंड टिफ दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन बिल्स, दे आर नॉट पासिंग, क्योंकि गवर्नर की सिग्नेचर चाहिए होती है टू पास एनी बिल. सो द गवर्नर्स आर नॉट अग्रीइंग एंड सिटिंग ऑन द बिल. तो इसीलिए नाउ पिनरई विजयन एंड एमके स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ Kerala and Tamil Nadu respectively, are going to fight together to bring about a change or a law कि बिल्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही गवर्नर अपने पास रख सकते हैं, उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते. सो समथिंग लाइक दैट हैज टू बी ब्रॉट इन अकॉर्डिंग टू दीज टू चीफ मिनिस्टर, एंड दे सेड दे विल फाइट टुगेदर फॉर दैट. One of the largest Bihu performances at a single night, at a single venue also, I mean single venue, तो sorry, and इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. You know, as many as 11,300 female and male dancers, and male drummers assembled together for the largest Bihu performance at a single venue and created 2 world records. Okay. However, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जो सॉन्ग यूज किया गया था वो नागास को उसने हर्ट करा. इट वाज नॉट अ, द नागा कम्युनिटी ऑफ असम फेल्ट that song was discriminating. Now let's talk about this Siv Raju, one of the tallest living elephants in Asia, with a height of 311 centimeter. 311 means 3.1 meters. So he has been awarded with the title of Gajaraj Ratnam by the Travancore Devaswam board. Look how nice, and he is decorated beautifully. ना कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया है. And look at its tusk, big huge tusk. थर्मल स्ट्रेस पोजेस थ्रेट टू सस्टेनेबल लाइवस्टॉक फार्मिंग. तो केरला में बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है. एंड यू नो लाइवस्टॉक फार्मर्स जो है जिनके पास एनिमल्स, काउज, बफेलोज वगैरह है जो ही होती है, इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनके एनिमल्स जो है वो इतना हीट, इतना थर्मल स्ट्रेस सहन नहीं कर पा रहे. सो द राइजिंग हीट इज पोजिंग अ थ्रेट टू द सस्टेनेबल लाइवस्टॉक फार्मिंग. इन one state is Kerala, there are other states also. Okay. A day after Bihar Chief Minister Nitish Kumar announced an ex gratia of 4 lakh to the kin of Hooch tragedy victims, senior BJP leader and Rajya Sabha member Sushil Kumar Modi asked him to declare amnesty and withdraw the 3.61 lakh FIRs related to prohibition and release those behind bars. In the interest of the family members, as they would be getting it after a long time.
So it is about the people who have died because of drinking of alcohol, and इसे एक नाम दिया था hooch tragedy, and this hooch tragedy के victims को 4 लाख 6 लाख इस तरीके से depending on the circumstances amount दिया गया है. So yes, it's true that in Mission Rajasthan the Congress does needs to put its house together, because Sachin Pilot and Ashok Gehlot, both of them are very popular leaders of Rajasthan, and there's a fight going on between exactly the two of them. So कांग्रेस पार्टी जो है वो भी ऐसा नहीं कर सकती कि एक को सपोर्ट करे एक को ना करे, बिकॉज दैट वुड बी, तो मतलब पूरा ड्रिफ्ट क्रिएट कर देगा वो. सो इट इज really important that it is at this stage things get well, वरना it will be very difficult to beat BJP in Rajasthan also. अभी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, they really need to work hard to maintain that. Future of India's civil society organizations. Now the civil society organizations are the organizations which fight for something, they can protest for something. So it's very difficult seeing that how the civil society organizations have been dumped down by the current government. Their voice is not heard and stuff like that. So it's difficult to see what the future of civil society organizations in India would be, because they do play a very important role in bringing about changes, making laws, bringing laws to the table and stuff like that, and their protest really matters. So governments must prepare people to deal with extreme weather events. That is true. The state of the ongoing global climate crisis is such that India is going to have hotter days, hotter days, and more of them every year. So more hotter, getting hotter and hotter and hotter by the year, and the mortality rate will of course increase in heat wave and all that. So yeah, so there should be some kind of preparation. I mean, if you're not able to manage the climate crisis globally, so I think something needs to be done for the heat stroke and heat waves. There has to be another solution, because it's not very easy to just bring down the temperature, right? A message for the planners in dealing with the dragon. So dealing with the dragon here, it has been used metaphorically, and dragon here signifies of course China. So he's talking about how can we deal with China, because of course China's recent move to allocate names to Arunachal Pradesh. Okay, it proves that China doesn't want good and healthy relationships with India. What do they mean by allocating and giving out names to Arunachal Pradesh like that? It's not their land to do that. So we have to be very careful of China and what it does. The Supreme Court judgment in the Media One case, Madhyamam Broadcasting Limited Media One Headquarters versus Union of India. That was a particular reading and not a very legal one. It is a landmark judgment in the freedom of expression and judicial fiat against sealed cover malpractice.
So basically this article, which is written by Kaleeswaram Raj, who is also a lawyer at the Supreme Court of India, this is talking about one such judgment that has ensured the freedom to freedom of expression, freedom to express, and it is one such judgment that has helped hold the Constitution up to the mark. So the judgment, it is a very important judgment, and I really advise you to read this article, because listen guys, what I can do is I can go on line by line and explain it to you, but that would be wrong in many ways. First is, it will take up a lot of time which we don't have, and secondly, what it will not do is, it will not help you better your own English and speaking and reading skills. When you read, when you read, you also imagine, you learn faster, your reading skills, your speaking skills also improve. So I suggest you read this, it will be very helpful. Okay, these articles. So the Aam Aadmi Party has changed its strategy in dealing with Modi as well as Congress. So So after the 2019 elections, when the Modi government came back to power after winning a majority, almost a majority, just after that, look how they have said that after May 23, 2019, the day the results of the general elections were announced and Mr. Modi came back as the Prime Minister, Kejriwal stopped using the word Modi in any of his speeches or tweets or anything, because before 2019, when Kejriwal used to directly attack Modi and attach names like psychopath and shameless coward with him, now they've stopped it. They do criticize Modi, but he never takes his name now. So this is a strategy, difference in strategy that they have used. Pessimism continues to decline, though not as rapidly as before. Read this 200 years ago and 50 years ago, very important. Connects you with your history, Sorry, I missed this. So, close to 52% of the urban consumers felt that the economic situation has worsened. It may be true, the inflation rates are high, unemployment is very high. So, there's a need for a recovery, faster recovery, and there's a need for the government to acknowledge it that yes, there are problems that are being faced. Against Rhodesia ineffective, the sheer futility of international trade sanctions against Rhodesia became evident after the engineered Rhodesia exported goods got this. So the Neiphiu Rio-led Nagaland government repealed the Nagaland Municipal Act of 2001. This led to the cancellation of the State Election Commission's March 9 notice for holding elections to Nagaland study in open local bodies, where 33% of the seats were reserved for women. Most traditional and urban organizations oppose the 33% reservation, and they argue that such reservation would violate the special provisions
So the Naga Mothers Association said that the state government erred in not listening to or consulting with women's organizations before taking the decision to appeal the Municipal Act. So yes, repeal the Municipal Act, that yes, it's about the reservation for women in Nagaland Municipal Corporation, and the government has taken it back, but of course the women's societies and organizations are saying that how can you do that, and you didn't even consult with us even once. Yemen. Yemen is now the largest humanitarian crisis in the world, with 83% of its population dependent on aid and protection. That is, the warring parties in control of parts of Yemen had signed the Stockholm Agreement. तो Yemen को दो अलग-अलग parties अलग-अलग उसमें control कर रही है, and they had committed to freeing conflict-related defendants, but the situations are not good in Yemen. क्या यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट को मैंडेटेड कर देना चाहिए, क्या मैंडेटरी कर देना चाहिए कि यूनिवर्सली स्क्रीनिंग टेस्ट होते रहेंगे, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि इफ देयर आर चांसेस ऑफ अ हार्ट डिसीज फॉर अ पर्सन, तो क्या इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए या नहीं? इट्स फॉर यू टू रीड. Now again, as I said yesterday, you read the questions. I read the questions again, and this time with the answers, right? And read the questions for today and the answers with the questions again tomorrow. Lustre, a quality that outshines the usual, the shining quality, that we say lustrous. So the luster of the night lights shone brightly against the ruin. Queer partners ask, how is marriage an urban elitist matter? That is what the center said, that it is urban and elitist. Leave decision on same-sex union to Parliament, says government. That it should not be Supreme Court, but the Parliament, the government, who should be making the decision for this. And the Supreme Court in turn says, we are in charge. You cannot make a law or something, we are the one who will decide. So there's a kind of a clash between the Supreme Court and the government. Karnataka polls. Number of women MLA is very low. Okay, so Pakistan court jails Chinese national charged with blasphemy. Italy minister sparks outrage with comment on ethnic replacement. Russia's parliament increases penalty for treason, terrorism. Saudi minister meets Assad and first to visit Syria since start of civil war. Okay. Putin visits Ukraine frontline regions
कब से ये वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, एंड पुतिन हैज विजिटेड यूक्रेन. Sudan's capital hit by blast as conflict enters fourth day. Sudan में भी conflict अब शुरू हो गया है. It has been on for a few days. Tim Cook opens Apple's first store in Mumbai. IPL. Mumbai Indians win against Sunrisers Hyderabad. Thank you. Like, share, subscribe, comment. Keep